गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है एससीओ's चीफ जस्टिस मीट। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। 18th मीटिंग हुई है अभी चीफ जस्टिसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स की, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर स्टेट्स हैं। इसको न्यू दिल्ली ने होस्ट किया क्योंकि आपको पता है कि इंडिया जो है वो इस बार एससीओ का भी प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हैं उनकी जो मीटिंग को हमारे इंडिया के चीफ जस्टिस ने जो है वो प्रिजाइड किया है, और आने वाले साल में उज़्बेकिस्तान को जो है वो रोटेशनल प्रेसिडेंसी सौंप दी जा रही है फॉर द ईयर 2024। अब शंघाई कोऑपरेशन का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जून 2001 में इसको बनाया गया था शंघाई में। करंटली इसके मेंबर स्टेट्स इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान है। लास्ट जो है 2021 में जब समिट हुआ था तो ईरान को एज अ फुल मेंबर जो है वो ज्वाइन कराने का डिसीजन लिया गया था। ठीक है, बस अब कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद ईरान एक फुल मेंबर बन जाएगा। अब ऑब्जर्वर स्टेटस देखें तो अफगानिस्तान, बेलारस, मंगोलिया, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और कतर के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए एससीओ? क्योंकि 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 22% ऑफ लैंड एरिया और 20% ऑफ जीडीपी जो है वो एससीओ कंट्रीज़ में जो है वो लोकेटेड है। रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर जो है एससीओ का, वो स्पेसिफिकली उन इशूज से डील करता है जो कि सिक्योरिटी और डिफेंस से रिलेटेड हैं। तो इंडिया के लिए सेंट्रल एशियन रीजन की कंट्रीज़ के साथ, जो कि बहुत नेचुरल रिसोर्सेज और वाइटल मिनरल्स के साथ जो है वो एंडाउड हैं, उसके साथ अच्छे रिलेशंस बनाना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आपके सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 54th रेजिंग डे परेड हुई है अभी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की, और नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी जो हैदराबाद में लोकेटेड है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। नीसा जो एक प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है सीआईएसएफ का, उसको इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए जो है वो सीआईएसएफ को ट्रेनिंग दी जाती है। सीआईएसएफ जो है वो 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था, क्योंकि 1968 में एक पार्लियामेंट में एक्ट पास हुआ था और इसको बनाया गया था। प्रीमियर मल्टी स्किल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है कंट्री का, लगभग 353 सच एस्टेब्लिशमेंट्स उनको प्रोटेक्ट कर रही है, जैसे एटॉमिक पावर प्लांट्स, स्पेस इंस्टॉलेशंस, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स, माइंस, ऑयल फील्ड्स, रिफाइनरीज एटसेट्रा। इवन वीआईपीज़ की भी प्रोटेक्शन में इसको लगाया जाता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी का काम भी इसको दिया गया था जब से कंधार हाईजैकिंग हुई थी, और प्राइवेट सेक्टर को भी जो है ऑन द पेमेंट बेसिस जो है ये फोर्स प्रोवाइड की जाती है, जैसे इन्फोसिस को जो है दी गई है, पतंजलि को दी गई है, रिलायंस को दी गई है, और ओवरसीज़ भी इसकी डिप्लॉयमेंट की जाती है यूनाइटेड नेशंस के मिशंस में। ठीक है, अकेली ऐसी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जिसका डेली पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि ये एयरपोर्ट्स पे, दिल्ली मेट्रो पे और आइकॉनिक मॉन्यूमेंट्स पे भी तैनात की जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंट्रोल्ड री एंट्री ऑफ सैटेलाइट्स। साइंस एंड टेक के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसरो ने पहली बार एक सैटेलाइट को जो है वो नीचे लाए हैं। मेघ ट्रॉपिक्स 1 एक कंट्रोल्ड मैनर में इसको लाया गया है आफ्टर इट्स एंड ऑफ लाइफ। अब ये जब एक सैटेलाइट की लाइफ ख़त्म हो जाती है तो क्या किया जाता है? जनरली तो उन सैटेलाइट्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है वो उसके ऊपर काम करती है और ओवर द ईयर्स वो सैटेलाइट्स को खींच लेती है, और बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमारी सैटेलाइट जब हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो फ्रिक्शन होती है, उसकी वजह से 99% ऑफ सैटेलाइट्स तो वहीं पर बर्न हो जाती हैं। बहुत थोड़ा बहुत जो डेब्री होता है वो अर्थ पर गिरता है, लेकिन कंट्रोल्ड री एंट्री जो है वो सिर्फ उन्हीं सैटेलाइट्स की जा सकती है जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में रोटेट कर रही हैं। इनको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स प्लेस की जाती हैं उनको हम कंट्रोल्ड री एंट्री नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कंट्रोल्ड री एंट्री के लिए फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो मतलब समझ लो आपके पास जो आखिरी में थोड़ा सा फ्यूल रह जाता है उसका यूज़ आप कंट्रोल्ड री एंट्री के लिए करते हो, और अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में आप सैटेलाइट भेज रहे हो तो इतना फ्यूल आप ऑफकोर्स नहीं भेज सकते कि उसको आप वापस भी कंट्रोल्ड री एंट्री के लिए ला सको। ठीक है, तो इसरो क्यों जो है वो कैसे लेकर आया है सैटेलाइट को नीचे, जो है कंट्रोल री एंट्री कैसे किया? पहली बार ऐसा जो है इसरो ने करके दिखाया है। 120 kgs ऑफ फ्यूल रिमेनिंग था इस सैटेलाइट में। 20 मैनूवर्स लगे लगभग 8 मंथ्स में, और इसको जो है वो हम पैसिफिक ओशन में ले आए हैं और कंट्रोल री एंट्री करी है हमने। कंट्रोल री एंट्री का मतलब क्या होता है कि जिस जगह आप चाहो वहाँ पर सैटेलाइट को आप लैंड करवाओगे या फिर आप क्रैश करवाओगे। ठीक है, अदरवाइज़ तो क्या होता है कि सैटेलाइट जो है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल जब एक्ट कर रही है तो कुछ पता नहीं होता कि वो कौन सी एरिया में जाकर गिरेगा। आप ब्रॉडर एरिया तो कंट्रोल कर सकते हो, बट नॉट द एंटायर एग्जैक्ट स्पेसिफिक एरिया नहीं कंट्रोल कर पाओगे बिना फ्यूल के।
अब इसरो ने ऐसा क्यों किया? इसरो इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि वो स्पेस को क्लीन करना चाहता है, अपनी वजह से वो डेब्री जो है वो स्पेस में नहीं करना चाहता है। जितना पॉसिबल है उतना हम जो है वो स्पेस को क्लीन रखना जो है वो अटैम्प्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टेरान 1 रॉकेट। ये आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1, उसका जो लॉन्च है उसको कैंसिल कर दिया गया है लास्ट सेकंड पर। वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है, कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने इसको बनाया है। 85% जो इसमें जो मास लगाया गया है वो 3D प्रिंटेड है, इंक्लूडिंग इसके इंजन्स, जो कि 9 इंजन्स हैं 3D प्रिंटेड हैं वो सब के सब। 3D प्रिंटिंग क्या होता है? एक प्रोसेस होता है 3 डायमेंशनल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बनाने का फ्रॉम अ डिजिटल फाइल। इसमें क्या होता है, लेयर लेयर दर लेयर आप जो है मटेरियल को इकट्ठा करते रहते हो जब तक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो जाता। समझ लो, आप एग्जांपल लो कि एक प्रिंटर इतने ज़्यादा प्रिंट्स निकाल रहा है जिससे कि एक 3D जो है वो आप जैसे अगर आप शीट्स ऑफ पेपर निकालते रहोगे एक के ऊपर एक रखते रहोगे तो एक काइंड ऑफ बॉक्स बन जाएगा ना, तो वैसे ही जो है 3D प्रिंटिंग भी वर्क करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉबी ली वीना। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बॉबी ली वीना जो है वो कहा जा रहा है कि G20 कॉन्फ्रेंस जो आंध्र प्रदेश में होगी उसमें डेलीगेट्स को दिया जाएगा। बॉबी ली वीना एक सरस्वती वीना है जो कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। कर्नाटिक क्लासिकल म्यूजिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये टाउन बॉबिली टाउन में जो है बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम बॉबिली रखा गया है। और इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी 2012 में मिल चुका है। एक सिंगल पीस ऑफ जैकवुड ट्री से इसको बनाया जाता है, एकांत वीणा भी इसको कहा जाता है इसीलिए। और सेंट्रल पार्ट जो है इसका, उसमें वो एक लाइन लाइन का हेड होता है। और इसके जो फ्रेट्स होते हैं वो बेल मेटल से बनाए जाते हैं। इसमें एक्सक्लूसिव डिज़ाइन बनाए जाते हैं और हर जो पीस होता है वो एक्सक्लूसिव होता है। और इसको जो है प्लास्टिक का भी इसमें अब इस्तेमाल किया जाने वाला है इंस्टेड ऑफ एलिफेंट टस्क। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। ये भी साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। विनोना स्टेट यूनिवर्सिटी मिनेसोटा ने एक ग्लोस्कोप डेवलप किया है जिससे कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है, मतलब उसको लार्ज स्केल पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट को स्टडी करना कि कैसे वो अपनी उस लाइट को रीएमिट करता है जिसको उसने ऑब्जॉर्व कर लिया है। ठीक है, तो कैसे काम करता है ये? जो आप एक ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट किया जाता है एक स्पेसिफिक वेवलेंथ से, ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को और एक हायर वेवलेंथ पर उसको रीएमिट करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि हम जो उस फ्लोरेस फिर हम उस प्रोडक्ट उस जो ऑब्जेक्ट को फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप स्कोप के अंदर रख के जो है उस ऑब्जेक्ट के इनसाइड को हम देख सकें। ठीक है, तो स्पेसिफिक फीचर्स जो हैं कुछ माइक्रोब्स के देखना, खासकर जो है लाइव सेल की इमेजिंग करना, उसके लिए पहले उसमें लाइट भरी जाती है ताकि उसको वो अब्जॉर्ब कर ले और उसके बाद उसको फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। ठीक है, अब ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी क्या होती है? वही एक लाइट माइक्रोस्कोप भी इसको कहा जाता है। इसमें हम ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। पहले ये भी देखा जाता है कि कैसे वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और कैसे स्कैटर करेगा विजिबल लाइट को। उसी को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हाई पावर्ड कमेटी ऑन एनिमल्स। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जुरिस्डिक्शन और पावर्स इंक्रीज कर दी है उस हाई पावर्ड कमेटी की जिसको सिर्फ इनिशियली कैप्टिव वाइल्ड एलिफेंट्स को जो है के ट्रांसफ़र को जो है स्टडी करने के लिए, ओवरसी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। अब उनको सारे के सारे उन एनिमल्स जिनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है या कैप्टिव रखा गया है, उनको या फिर इंपोर्ट किया जा रहा है, उनको स्टडी करने के लिए जो है मैंडेट दे दिया गया है। इसकी चेयरपर्सनशिप जो है वो जस्टिस दीपक वर्मा, फॉर्मर जज जो हैं, उनको उनके पास रखी गई है। अब कोई भी ग्रीवेंस अगर ट्रांसफ़र या इंपोर्ट ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन टू इंडिया की वजह से आ रही है तो उसको जो है ये कमेटी देखेगी। इसके मेंबर्स जो हैं वो एक्सपैंड कर दिए गए हैं। पावर्स और फंक्शंस क्या होंगी कि सारी स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज़ अब जो है किसी भी तरह का सीजर हो रहा है, अगर वाइल्ड एनिमल्स या अमेंडमेंट हो रही है कैप्टिव वाइल्ड एनिमल्स की, वो कमेटी को रिपोर्ट करेगी। कमेटी के पास पावर होगी कि वो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ कैप्टिव एनिमल्स के लिए जो है वो रिकमेंडेशन दे सकती है किसी भी रेस्क्यू सेंटर या जू को। और उनके पास ये पावर होंगी कि वो नेसेसरी चेक्स और जो है फैक्ट फाइंडिंग एक्सरसाइजेज भी कर सकेंगे। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं INS सह्याद्री। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेवी की INS सह्याद्री जो है वो 2 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स ऑफ फ्रांस को जो है वो अकम्पनी कर रही है
2-day मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अरेबियन सी में। शिवालिक क्लास मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रेगेट है INS सह्याद्री। ये हमारी इंडियन नेवी की ईस्टर्न फ्लीट की मेंबर है। इसमें जो है मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो की जा रही है, इसमें क्रॉस डेक लैंडिंग्स, बोर्डिंग एक्सरसाइजेज, सीमैनशिप एवोल्यूशन, ये सब किया जाएगा। और स्टेल्थ फ्रिगेट्स जो शिवालिक क्लास की हैं, उसमें INS सह्याद्री के अलावा और कौन कौन आती हैं? INS शिवालिक और INS सतपुरा। इन सबको मैजागांव डॉक लिमिटेड ने ही बनाया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अय्या वैकुंठ स्वामी काल। आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली श्री अय्या वैकुंठ स्वामी काल को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर रिस्पेक्ट पे की है। वो एक सोशल रेवोल्यूशनरी थे साउथ इंडिया और केरला के। वैकुंठ जो है उन टीचर, हीलर और मेडिकल वर्कर माना जाता है उन्हें, और इन्हीं की वजह से जो है सोशल और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चली, जैसे कि अपर क्लॉथ एजिटेशन, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, नारायण गुरु, छतम्पी स्वामी काल, पलालर अयंकाल जैसे जो है जो आपके स्पिरिचुअल लीडर्स थे या सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनको भी जो है इन्होंने ही इंस्पायर किया। तो नारायण गुरु जी फिलासफर थे, स्पिरिचुअल लीडर थे, सोशल रिफॉर्मर थे, एजवाहा कास्ट को बिलोंग करते थे। उन्होंने कास्ट रिडन सोसाइटी ऑफ केरला के अगेंस्ट मूवमेंट चलाया। और वैकोम सत्याग्रह बहुत ही फेमस है, सोशल प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है वो अगेंस्ट अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इन द हिंदू सोसाइटी ऑफ केरला, ये चलाई गई थी। उन्होंने जो है लगभग 45 वर्क्स पब्लिश किए मलयालम, संस्कृत और तमिल लैंग्वेजेस में। So now let us see all these topics in English. So the first topic is SCO's Chief Justice meet. This topic is important for your international relations. So 18th meeting of Chief Justices of Supreme Courts of Shanghai Cooperation Organization member states was hosted by New Delhi because India is the current president of SCO. For the year 2023. So this meeting was presided by, of course, Chief Justice of India, and it was decided that this will the presidency of for the next meeting of G's Chief Justice will be entrusted to Uzbekistan, because they are the next president of SCO in the year 2024. So what is SCO? This is a permanent intergovernmental international organization which was created in June 2001, and it includes India, Kazakhstan, China, Kyrgyzstan, Pakistan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan. And in 2021, in the Dushanbe summit, it was decided that even Iran will be included as a full member. So currently, Afghanistan, Belarus, Mongolia, Saudi Arabia, Egypt, and Qatar, they are the observer states of SCO, and in future date they will also be accommodated within the SCO family. So what is the significance of SCO for India? So approximately 42% of the world population, 22% of land area, and 20% of the GDP is represented by SCO, and it also has this regional anti-terrorism structure which deals with issues related to security and defense, because Central Asian region is richly endowed with natural resources and vital minerals, this region, and this SCO is important for India. So the next topic is Central Industrial Security Force. This topic is important for your security section. So 54th Raising Day Parade of CISF was held recently at National Industrial Security Academy of Hyderabad, which is the training institute of CISF. CISF was established in 1969 as per the Parliament's Act of 1968. It is a premier multi-skilled organization which is under the administrative control of Home Affairs Ministry, and it is providing security cover to almost 353 establishments across the country, which includes atomic power plants, space installations, defense production units, mines, oil fields, and refineries. It also provides protection to VIP protectees of Z plus Z, Y, and X category across the country. After the Kandahar hijacking, even that specialized task of airport security was handed over to CISF in the year 2000. It also provides security to the private sector on payment basis, of course, like Infosys campuses in Mysuru, Bengaluru, and Pune, Patanjali Food and Herbal Park in Haridwar, and even Reliance Refinery in Gujarat's Jamnagar are taking or availing the services of CISF on payment basis. So even CISF has been deployed at United Nations stabilization missions, and it is the only central armed police force which is having a daily public interface, because it is deployed in airports, Delhi Metro, and other iconic monuments. So the next topic is controlled re-entry of satellites. This topic is important for your science and tech section. So Indian Space Research Organization for the first time has brought down a satellite in a controlled manner after its end of life. So what happens to satellites once their life ends? Generally they are left in their orbit because the gravitational pull of the earth works on them,
and they bring them down over years. So when the satellites re-enter atmosphere, the friction causes it to heat up to extreme temperatures. So 99% of the satellite gets burnt up during this uncontrolled entry, but a controlled re-entry is possible only for satellites in low Earth orbit. This is a very important fact. You need to remember that, because generally it is just about 1,000 kilometers away from the surface of Earth. So we can have sufficient fuel reserves to which can be maintained in these satellites, so that in case their life ends, we can bring them down in a controlled manner. But this is impossible for satellites which are placed in geostationary or geosynchronous orbit, because they are so far away from Earth, almost 36,000 kilometers away. So such a huge fuel reserve would not be possible to be made, and because it would require a lot of fuel for them to make a controlled re-entry. So this is not possible in case of geostationary or geosynchronous orbit satellites. So how ISRO brought down these satellites? For the first time, this attempt was made by ISRO, and because in this satellite 120 kgs of fuel was remaining, so it took about 20 maneuvers of over 8 months to bring the satellite down and it got burnt up over the Pacific Ocean. So why did ISRO attempt a controlled re-entry? Because we wanted to demonstrate that we have the capability to do so. We also want to keep as much we want to keep the space as much clean as possible. Of course, we can only keep the space out of the lower Earth orbit clean. We can only provide for the controlled re-entry of these of the objects which are moving in the low Earth orbit, but we have no control over the geosynchronous and geostationary orbits. Okay. So there is also this Kessler syndrome, which is a scenario in which the amount of, say, space debris would reach a point where it will create more and more collision, more and more space debris, because the object would start colliding with each other. So we do not want that situation to happen. That's why we are attempting controlled re-entry of satellites in which we can manage to do that. So the next topic is Terran 1 rocket. This topic is important for your science and tech section. So world's first 3D printed rocket, Terran 1, its launch was cancelled at the last moment recently. So it is the world's first 3D printed rocket. It has been built by California's company, aerospace company, or startup, more to be more precise. So 85% of its mass is 3D printed, including its engines, which are 9 in number. So what is 3D printing? It's a process of making three-dimensional solid objects from a digital file. So you basically create successive layers of material until the object is created. Like I was giving an example, if you want to create a box or a closed box, what you would do, if you just print, or if you just keep A4 size sheets one by one, you will reach a stage where it will create a box, or a 3D printed box, or a 3D box like image. So that's how this 3D printing also works. So the next topic is Bobby Lee Veena. This topic is important for your art and culture section. So the famous Bobby Lee Veena is likely to be presented as part of a cultural exchange to the delegates of the G20 conference, which is scheduled to be held in Andhra Pradesh. So with this, Bobby Lee Veena is also known as Saraswati Veena, and because it is used in Carnatic classical music, because it emerges from the town of Bobili. That's why it is named after it, and it earned a geographical identification tag in 2012 also. It is made from a single piece of jackwood tree, and unlike other veena, which are made from joining two pieces of wood, that's why it is called the Ekant veena also. Its central part has a lion's head, and its frets are made up of bell metal. It has exclusive designs. Its decorative inlay work, which was used to be made of elephant tusk, is now being replaced by plastic. So the next topic is fluorescence microscopy. This topic is important for your science and tech section. Researchers at Winona State University, Minnesota have created a design for glowscope which will democratize the access to fluorescence microscopy. What is fluorescence microscopy? In this type of method, what you do is you study how an object re-emits light once it absorbs it. So what you do is you illuminate
the object with a specific wavelength of light, the particles of that object starts absorbing this light, and then they re-emit it at a higher wavelength when you start observing with a microscope. So generally we use this technique to identify and study different entities. For example, if you want to study the dynamic behavior exhibited in a live cell, we use this, we first fill it with the light, the particles in that object absorb it, and when they move we observe them under the microscope. So this is what we also call optical microscopy, which means that we are using we are studying these objects, how they absorb light, how they reflect light, or how they scatter the visible light. So the next topic is High Powered Committee on Animals. This topic is important for your environment section. So Supreme Court has recently increased the jurisdiction and powers of a high powered committee to conduct necessary checks. So this committee was initially only constituted to oversee the transfer of captive wild elephants from Tripura and Gujarat, and now it has been given the wider responsibility, and it will cater to all wild animals in need of rehabilitation or rescue anywhere in India. So this committee was set up under the chairpersonship of former Judge Justice Deepak Verma, and now this committee would consider all kinds of transfer or import of wild animals into India and their procurement or welfare. So it will now have the powers and functions as follows. All state and central authorities will now report seizure of wild animals or abandonment of captive wild animals to this committee. The committee will be having the liberty to recommend the transfer of ownership of captive wild animals to any willing rescue center or zoo. Committee will also be free to conduct necessary checks and undertake fact-finding exercise in any pending or future complaint. So the next topic is INS Sahyadri. This topic is important for your security section. So Indian Navy's INS Sahyadri has joined two frontline warships of France in carrying out a 2-day maritime partnership exercise in Arabian Sea. So INS Sahyadri is a Shivalik class multi-role stealth frigate. This vessel is a member of Eastern Fleet of Indian Navy. This maritime exercise is witnessing cross-deck landings, boarding exercises, seamanship evaluations, etc. So this INS Sahyadri belongs to Shivalik class frigates, which are built by Mazagon Dock Limited. The other two frigates are INS Shivalik and INS Satpura. So the next topic is Ayya Vaikund Swamika. This topic is important for your art and culture section. PM Modi has recently paid his respect to Sri Ayya Vaikund Swamika on his birth anniversary. He was the pioneer of social revolutionaries of South India and Kerala. Research scholars regard him as the teacher, healer, and also miracle worker. It resulted in the he made several social changes in southern India, which led to emergence of a series of social and self-respect movements, including the upper cloth agitation, temple re-entry movement, these movements also included the movements made by Sri Narayan Guru, Chatampi, Swamikal, Valalar, and Ayankali. So who was Sri Narayan Guru? He was a philosopher, spiritual leader, and social reformer of India, and he belonged to a Zavaha caste, and he led a reform movement against injustice meted out by the caste-ridden society of Kerala. So the most famous movement that he led was the Vaikom Satyagraha of 1924-25 period, which was a social protest in Travancore state against untouchability and caste discrimination. So he was involved himself with Vaikom Satyagraha and extended cooperation. He published almost 45 works in Malayalam, Sanskrit, and Tamil languages. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.